My name is Ashwini Nagpure. I am a FY student. Today I am taking digital lesson on topic science. Good afternoon, students. Good afternoon, ma'am. How was your day? Nice, ma'am. And what is day today? Ma'am, 28. Day. Day It's Saturday. And what is the day? 29. So subject is science. So student, what is in my hand? Ma'am, Can book. anyone tell? Book. Book. So, can this object change their shape? No. No. Then, what is this? What is in my hand? Water bottle. Water bottle. And what is present inside the bottle? Water. Water. Can water change their shape on its own? No. No. And this third object, which is Pen. pen. So everyone know that we see the different objects in our surrounding which change their shape. They are some of them are glowing, some of them are spread. So this difference can tell us that the matter which exists in a different form. So today we are discussing about the different forms of matter which is called as the states of matter. So can anyone tell me about the matter? Ma'am, matter is anything that has mass that occupies space. Yes. So matter that has matter. How to define matter? So Matter is anything- matter that has mass and occupies some space. So it exists mainly in three different forms, which is first one is Solid, solid. Then the third state liquid, is liquid. And the third state is gases. gases. So, do you know about how solids form? Can anyone tell me? So, Contact of molecules. yes. So, there are three states of matter. In the first picture, we will see the arrangement of the solid particle in the solid object. Then in the second picture, we see that which is liquid arrangement, which is liquid particle arranged in their different form. And the last picture shows the gaseous particle, which shows the different arrangement. All of these are same. No, ma'am. All of these shows the same arrangement. No, ma'am. नो सो इसके वजह से मैटर क्या होता है, अलग अलग फॉर्म में एग्जिस्ट करता है. सो फर्स्टली हम देखेंगे अबाउट सॉलिड. फर्स्ट स्टेट ऑफ मैटर इज Solid. solid. So solid have a fixed shape and a fixed volume. Can you see these two pictures? Yes, ma'am. First picture shows Stones. stones and the second picture shows Metal. So in the solid particle there is a fixed shape and fixed volume. So in this type of solid arrangement, particles are tightly packed and they have a very less space, so they can form they can possess the stronger intermolecular force of attraction. So there are can anyone tell me the example of solid? Stones. Stones, any type of metals, as well as table and the ice. Then the second state, which is liquid. So second slide is about liquid.
So in this slide, can you see the two images? Yes, ma'am. Yes, which shows first in the first picture we will see the water, and in the second picture, what do you observe? There is oil. So in the liquid there is no fixed shape, but it shows the fixed volume. Particles in the liquid are loosely packed, and there is some spaces between the liquid particle which can flow from one place to another, and there is a smaller intermolecular force of repulsion, a force of attraction. Then liquid examples of liquid are water, oil, and the milk. Can anyone tell another examples of liquid? Buttermilk. Okay. So buttermilk is also liquid form. So then the last, which is a third state of matter, which is a gas. So we will see the slide. So what do you observe in this picture? Steam. Steam and the balloon. Balloon is a solid or in a gaseous form? Can balloon is in solid form or in a gaseous form? Solid. Both. So balloon, actually the balloon is solid form, but inside the balloon there is a Space. gas present. So in the gaseous state of matter, the gas shows which is a fixed. They do not show fixed shape. They does not have a fixed volume, but a little bit volume. Then the particle in the gases are far apart. Far apart मतलब उन दोनों के बीच का जो भी difference होता है between the gaseous particle, there is a maximum difference. Then they move freely in all direction. क्या आप feel करते हो air? Yes, ma'am. Yes. So the gaseous particles are far Means apart from each other. Then in the particle of the gases there is a maximum distance which is present, and they can spread in all directions. Can anyone tell the example of the gases? Oxygen. Oxygen. Nitrogen. Then air, which is present inside, which is present in the environment, is also example of the gaseous form. Then the third, Helium. carbon dioxide. Yes. Helium. Carbon dioxide is also gaseous. Helium. Helium. Helium is also a LPG gas. Methane gas. Very good. So, in the next slide. So, we will see about the changes in the states of matter. How these changes occurs. So, first one, the name of the process will be melting. What क्या होता है मेल्टिंग में? आपने कभी घर पे एक्सपेरिमेंट किया है? Yes, ma'am. आपने आइस को देखा है? Yes, ma'am. आइस कैसे मेल्ट होता है? Yes, ma'am. आइस कौन सा फॉर्म है स्टेट का? Solid. मैटर का? Solid. सॉलिड फॉर्म. और ये सॉलिड फॉर्म को जब भी सराउंडिंग हीट या कोई भी एनर्जी मिलती है तो वो क्या करने लगता है? अपना Melt. स्टेट Change चेंज होता करने है. लगता है. सो फर्स्ट स्टेट विल बी मेल्ट. So in this state, solid is directly converted into the liquid form by giving heat. So यहाँ पर आपको पिक्चर दिख रहा है. पिक्चर में फर्स्ट जो भी फ्लास्क है वहाँ पर क्या है? एनी टाइप ऑफ सॉलिड हम कंसिडर करते हैं आइस है. और जब हम आइस को हीट करेंगे या फिर वो सराउंडिंग की एनर्जी एब्जॉर्ब करके किस में चेंज हो जाता है? इनटू द लिक्विड फॉर्म. सो एग्जांपल बोल सकता है कोई? दिस इज मेल्टिंग प्रोसेस में. अनदर एग्जांपल. Yes, Jayashree? Butter. Very good. So, first process is the melting. Then the second one, which is freezing. आप रेफ्रिजरेटर में क्या रखते हो? Water. आइस बनाने के लिए? Water. So, it is a type of process which is a freezing. In the freezing, there is conversion of liquid into the solid. तो यहाँ पर हीट क्या होगी? क्या लगता है आपको? यहाँ पर हीट हम हीट देते हैं या फिर उससे हीट रिमूव होती है? हीट रिमूव होती है. सो इन द फ्रीजिंग देयर इज अ कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू सॉलिड बाय प्रोसेस ऑफ कूलिंग. जब हम उसको कूल करते हैं मतलब उसका टेम्परेचर कम करते हैं तो लिक्विड जो भी स्टेट है कन्वर्ट हो जाता है इनटू द सॉलिड फॉर्म.
तो इसका हम एग्जांपल दे सकते हैं कैंडल वैक्स। आप सबने कैंडल देखी है, Yes. जब आप उसको क्या करते हो, बर्न करते हो, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, इनटू द लिक्विड फॉर्म। सो द नेक्स्ट प्रोसेस इज इवेपोरेशन। इवेपोरेशन का आपने किया होगा घर पे Yes, एक्सपेरिमेंट। ma'am. सो इन दिस प्रोसेस कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू द गैसेस बाय गिविंग एनर्जी, मतलब हम उसको क्या करते हैं, Heat एनर्जी energy. प्रोवाइड करते हैं, तो जो भी लिक्विड स्टेट है वो कन्वर्ट होता है इनटू द गैसियस फॉर्म। तो यहाँ पर एनर्जी हमें क्या करती है, देनी पड़ती है। इसका अगर एग्जांपल देखेंगे तो ड्राइंग क्लोथ्स, जब हम क्लोथ्स वॉश करते हैं तो हम उसको सुखाने के लिए रखते हैं, तो किस में रखते हैं हम, अंडर द सन, जहाँ पर। सो हमने इवेपोरेशन प्रोसेस देखा। इन दिस प्रोसेस लिक्विड इज चेंजिंग इनटू द गैसियस फॉर्म बाय गिविंग हीट। यहाँ पर आपको दिख रहा है फर्स्ट क्लास में हमने क्या लिया है, विच इज अ लिक्विड, एंड उसको जब हम हीट करेंगे वो कन्वर्ट हो जाएगा इनटू द गैसियस फॉर्म। और कुछ एग्जांपल आपने हमारे डे टू डे लाइफ में भी देखे होंगे, जबकि हमारी मॉम जो भी है कुकिंग करती है, तो देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेज, जिसका आप क्या करते हो, स्मेल लेते हो, और वो स्मेल से आपको पता चलता है कि आज घर में क्या खाना बनाया है। सो ऐसे डिफरेंट टाइप ऑफ एग्जांपल हम हमारे डे टू डे लाइफ में क्या करते होते हैं, क्या कर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं। कोई और बता सकता है इवेपोरेशन का एग्जांपल, अनदर एग्जांपल ऑफ इवेपोरेशन? यस, वाटर साइकिल। वो कैसे बनता है, तो जो भी समुद्र का पानी होता है, बाय यूजिंग द सन, या फिर सन की जो हीट होती है उससे क्या होता है, वो समुद्र का पानी इवेपोरेट होने लगता है, और इवेपोरेट होके वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, इनटू द गैसियस फॉर्म। वो गैस फिर से क्या होता है, चेंज होता है इनटू द क्लाउड्स, और क्लाउड फिर से क्या होता है, कंडेंस लिक्विड फॉर्म में, कंडेंसेशन होता है, लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होता है। ऐसे कंटिन्यूअसली वाटर साइकिल चलती रहती है, तो इसमें इवेपोरेशन प्रोसेस भी होती है। देन आई विल शो यू समथिंग। So this chart, what do you observe in this chart, Jayashree? Solid is converted into by melting converted into liquid, and liquid get evaporated, converted into gaseous form, and again gaseous by sublimation, deposition, it converted into solid. Yes. Solid again freezing, liquid get freezing and converted into solid. Yes, yes, very good. Clap for her. So, here is a solid. What type of particle arrangement do you see in the solid? There is a no spaces which is present between the solid. मतलब solid जब हम state देखते हैं तो उसमें जो भी पार्टिकल होता है वो कैसे होता है, टाइटली हेल्ड होता है, मतलब उनके बीच का जो भी अट्रैक्शन होता है वो क्या होता है, बहुत ही ज्यादा मैक्सिमम होता है। उसकी वजह से उसको एक डेफिनाइट शेप और डेफिनाइट वॉल्यूम मिल जाता है। सो इन दिस प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग, यहाँ पर आपको दिख रहा है जो एरो रिप्रेजेंट हो रहा है, विच इज अपवर्ड एरो, इट शोज द मेल्टिंग प्रोसेस, जिससे क्या हो रहा है, सॉलिड इज डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू द लिक्विड बाय गिविंग हीट। वैसे ही अगर आप देखोगे तो लिक्विड होता है, लिक्विड में थोड़े से स्पेसेस क्या होते हैं, बचे हुए होते हैं, तो उनके बीच में जो भी इलेक्ट्रो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा वो कैसे रहेगा, एज कंपेयर टू सॉलिड वो मिनिमम रहेगा। सो दिस डाउनवर्ड एरो शोज द चेंजेस इन स्टेट फ्रॉम लिक्विड इनटू द सॉलिड। सो यहाँ पर जो भी होता है, जब हम कूलिंग करते हैं तो कूलिंग की वजह से लिक्विड क्या होता है, कन्वर्टेड इनटू द सॉलिड फॉर्म। दिस प्रोसेस इज नोन एज अ फ्रीजिंग एंड द दिस गैसियस फॉर्म। आपको यहाँ पर बलून दिख रहा है, बलून में जो भी एयर होता है, तो एयर के जो भी पार्टिकल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, इट मूव्स इन ऑल डायरेक्शन, और जब भी गैसेस को लिक्विड को क्या करेंगे, हम हीट देंगे तो वो कन्वर्ट हो जाता है इनटू द गैसियस फॉर्म, जो प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इवेपोरेशन बोलते हैं। वैसे ही सिमिलर प्रोसेस होता है, गैसेस जब हम उसको क्या करते हैं, कूल डाउन करते हैं, या फिर उससे हम टेम्परेचर क्या करते हैं, कम करते हैं, तो वहां पर वो चेंज होता है फ्रॉम द गैसेस इनटू द लिक्विड फॉर्म। सो दिस प्रोसेस इज आल्सो नोन एज कंडेंसेशन। Similar like this, from the left side we see that gases is converted into the solid form. This process is known as a deposition. And इसके रिवर्स जो भी प्रोसेस है, which is
solid is directly converted into the gaseous form by giving heat, तो वो प्रोसेस को बोलते हैं हम sublimation. So आज हमने क्या क्या देखा है, कोई बोल सकता है? So firstly हमने देखा है about matter. तो matter क्या होता है? Can anyone tell me what is matter? What is matter? कोई बोल सकता है matter? Yes. Ma'am, matter is a state of solid, liquid, gases. No. Okay, I will tell that. So matter, anything, कोई भी हम अगर ऑब्जेक्ट लेंगे तो it has a mass. The object has a mass and it occupies some space. So जो भी मैटर होता है वो क्या होता है, हमारे सराउंडिंग के जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं उसको हम मैटर बोल सकते हैं, कि जिसको हर एक ऑब्जेक्ट को क्या होता है, एक स्पेसिफिक मास होता है और वो क्या करता है, अपना खुद का स्पेस, कोई भी कि जो भी जिसकी जैसा ऑब्जेक्ट वैसे स्पेस क्या करता है, ऑक्यूपाई करता है. जैसे कि ये बॉटल है, अगर मैंने ये टेबल पर रख दी तो वो क्या करेगा, ये बॉटल को कुछ ना कुछ मास है प्लस जो मैंने रखी है तो वो कुछ ना कुछ वॉल्यूम क्या कर रहा है, ऑक्यूपाई कर रहा है. सो जैसे मैंने यहाँ पर दिखाया है कि मैटर इज एनीथिंग दैट हैज अ मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस. सो जो भी मैटर है उसके डिफरेंस की वजह से वो तीन स्टेट पे क्या होता है, एग्जिस्ट करता है, विच इज द फर्स्ट वन इज अ सॉलिड, सेकंड वन इज अ लिक्विड एंड थर्ड वन इज अ इन द गैसियस फॉर्म. सो कैन एनीवन टेल मी द पार्टिकल अरेंजमेंट ऑफ द सॉलिड? कोई बोल सकता है सॉलिड में पार्टिकल अरेंजमेंट कैसी होती है? यस, कॉम्पैक्ट. So there is no space between the two particles which is in the solid. Then in the liquid particle arrangement of liquid. Yes, intermolecular force ज्यादा नहीं होता, वहाँ पर स्पेस जो भी होता है वो क्या होता है, ज्यादा. And the gaseous there are a maximum intermolecular space is available. So melting process के बारे में कोई बता सकता है? What is melting? What is melting? Yes. The state of solid getting converted into liquid. Very good. So there is a conversion of solid into liquid by giving energy. Then last, which is the evaporation. What is the example of evaporation? Ma'am, ice melting and then Evaporation. heated. Ma'am, ice is melted and it is converted into liquid, and after heating process it is converted into vapor steam and then it forms in a gaseous state. Very good. So this is process is also known as evaporation. So in this way today we are learning about the different states of matter, which is solid, liquid and gases, and there is different processes. First one is melting, second one is freezing, and the third one is evaporation. There is another different process, it's called as a condensation, deposition and the sublimation. So it is all about today. Thank you.